Hello everyone. In continuation of the today's video lecture, we will start again unit number 4, the topic probability. Yesterday we have gone through the topic of probability, what are the basic terminologies related to the probability, what are the various definitions, and there were two theorems, addition and multiplication. Today we will start with a new topic, binomial distribution. Binomial distribution, bi meaning two and distribution meaning equal divide. So where there are only two outcomes of any event is known as the binomial distribution. Right? For example, if we say a coin is tossed, there are only two outcomes, head and tail. This is known as the binomial, or we can say if we give an exam, there are two outcomes, fail or pass. तो जहां पर भी किसी इवेंट के होने के दो आउटकम होंगे, दिस इज नोन एज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. लेट अस अंडरस्टैंड इट. सपोज अ रैंडम experiment with exactly two outcomes is repeated n times independently. The probability of success is P and that of failure is Q. Assume that out of these n times we get success for x time and failure for the remaining, that is n minus x times. The total number of ways in which we can have success is NCX. आपने कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, उसमें हमने पढ़ा है NCR. यहाँ पर XR के प्लेस पर यूज हो रहा है, राइट. तो वहाँ पर फॉर्मूला हम क्या पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन में, NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, राइट. जहाँ पर फैक्टोरियल हम पहले ही पढ़ चुके हैं. फैक्टोरियल इज द एक्सपेंशन ऑफ द नंबर अप टू 1. A random variable x will have a binomial distribution if p of x is equal to x is equal to probability of x is equal to ncx p की power x q raised to the power n minus x, जहाँ पर p probability of happening and q probability of not happening of an event. Next is the conditions for binomial distribution. There are few conditions. First, each trial result in only two outcome. That is, एक ट्रायल के केवल दो आउटकम हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सक्सेस एंड फेल्यूर, लाइक गुड एंड बैड, पास एंड फेल, rich and poor, etc. The number of trials is finite. Number of जो ट्रायल हैं हम उसको वो finite होंगे. They are fixed in countable terms. नेक्स्ट, ट्रायल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मीनिंग एक ट्रायल दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा. नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P फॉर डेट ऑफ फेल्योर Q इज कांस्टेंट फॉर ईच ट्रायल. जब जितने भी ट्रायल होंगे, नंबर ऑफ ट्रायल्स, दे P एंड Q विल बी कांस्टेंट. नेक्स्ट इज द बेस थ्योरम. बायस थ्योरम ने क्या कहा? बायस थ्योरम इज द रिवर्स ऑफ classical approach of probability. Yesterday we have studied what is the probability. The probability is the guess of happening of the outcome, or we can say where we are not sure about the result, it is known as the probability. As we discussed yesterday with an example, like it may be rain. इफ वी सी कि बादल हो रहे हैं, क्लाउड्स आर देयर, तो बारिश हो सकती है, मीनिंग इट मे और नॉट मे बी, वी आर नॉट फिक्स्ड, राइट. बट इन बेस थ्योरम, बेस ने उसका जस्ट रिवर्स कहा कि इवेंट हो चुकी है एंड आफ्टर हैपनिंग ऑफ द इवेंट वी आर जस्ट फाइंडिंग व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. तो बारिश हो गई है, क्यों हुई है बारिश? क्योंकि बादल आ गए थे, मौसम खराब था. और वी कैन से अनदर एग्जांपल हियर कि मार्क्स रिजल्ट आ गया है, तो अगर अच्छा है तो वाई इट इज गुड एंड फॉर द बैड वाई इट इज बैड. वी आर नॉट टेकिंग प्रिकॉशन बिफोर द एग्जाम की रिजल्ट कैसा. अगर हम पेपर दे के कहते हैं कि मेरा पेपर में इतने रिजल्ट आएंगे, दिस इज द प्रोबेबिलिटी, बट आफ्टर सिक्योरिंग द मार्क्स वी आर जस्ट giving the reason. This is known as the Bayes theorem. It was named after English mathematician Thomas Bayes 1701 to 1761. The formal definition is that it is the reverse of
classical approach of probability and given by the formula P A upon B is equal to P B over A into P A upon P B, जहाँ पर P A over B का मीनिंग समझिए आप सभी। A जो न्यूमरेटर में इसका मतलब है इवेंट विच हैज टू बी कैलकुलेटेड विच इज टू बी हैपन एंड B द इवेंट विच हैज ऑलरेडी अकर्ड। B पहले ही हो चुकी है तो A के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कंडीशन आ गई यहाँ पर। तो उसका फॉर्मूला क्या है, पी बी अपॉन ए। बी हो चुकी है और ए अभी होनी है। Next is the theoretical frequency distribution. Theoretical frequency distribution is also called as expected or probability or model frequency distribution. Theoretical distribution is defined as a distribution of frequencies which is not based on actual experiments or observation but is constructed through expected frequencies obtained by mathematical computation based on certain hypothesis। जहाँ पर हम hypothesis को assume करके कुछ expected frequency निकालते हैं, frequency the number of times a things can occur, this is known as theoretical frequency distribution। Importance, why, what are the utility or the importance, why we are studying it? The first is estimate of nature and trend of frequency distribution. Based on we can estimate the nature and trend whether it will be upward, downward, etc. Basis of logical decision. On the basis of theoretical distribution we can take a logical decision. Next is forecasting. In the business, we forecast for the future. We assume by how much investment, how much profit we can earn. Next, substitute of actual data. We can use it as a substitute of actual data. Next, test of sampling. Probability की हेल्प से हम सैम्पलिंग को टेस्ट कर सकते हैं। We will study in the next unit number 5 sampling and sampling distribution. Next, सॉल्यूशंस ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ डेली लाइफ। प्रोबेबिलिटी की हेल्प से हम डेली डे टू डे रूटीन की प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देयर आर टू टाइप्स, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट मीनिंग विच टेक द होल नंबर लाइक द for example, number of children in the family, number of books, number of subjects, etc. Continuous probability distribution, continuous probability which take the values in the range. For example, height. The height is not in the round number. It may be 5 foot 3 inch. Marks. It is not necessary आपके marks एक round number में हो. It may be in decimal or points also. The weight, rupees, income, etc. Discrete is again of two types, binomial and Poisson. Binomial we have already studied, binomial which take only two values, success and failure. Poisson we will study in next where n is very large. Continuous we will study one type, normal distribution. Binomial, as we have studied earlier, binomial is a discrete frequency distribution which is based on dichotomous meaning two event alternative on the basis of probability of date of success and failure. This distribution in the form of probability density function like Px of x, Ncx, Pxq की power n minus x. Assumption we have already gone through this. We move to the another slide. Poisson distribution. The Poisson distribution was developed by the French mathematician Simon Denis Poisson in 1837. The Poisson distribution is a discrete function meaning event can only be measured as occurring or not as occurring. हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. Meaning variable can be measured in whole number. It cannot take the fraction or the decimals. Fractional occurrences of the event are not a part of the model. The formula is, suppose we conduct a Poisson experiment in which the average number of successes within a given region is mu, then the Poisson probability is Px of mu is equal to e raised to the power minus mu, mu ki power x divided by factorial x.
Characteristic of the assumption: first, it is a discrete distribution. Discrete meaning it take only the whole number. Second, each occurrence is independent of the other occurrences. पहली इवेंट दूसरी इवेंट पर डिपेंड नहीं करती है. थर्ड, it describe discrete occurrences over an interval. discrete interval एक टाइम के बाद में अकर होंगी. Next, the occurrences in each interval can range from 0 to infinity. It may be value from 0 to infinity. मीनिंग वहाँ पर n ट्रायल फिक्स्ड है, बट बायनोमियल में इसमें n ट्रायल फिक्स नहीं है. नेक्स्ट, द मीन नंबर ऑफ occurrences must be constant throughout the experiment. मीन नंबर एवरेज विल बी constant है. Next is, what is the relationship between the binomial distribution and the Poisson distribution? The binomial distribution tends towards the Poisson distribution when n tends to infinity and p tends to 0 and np meaning mean stay constant. Binomial distribution में हमने पढ़ा था n की वैल्यू फाइनाइट है. जब तो बाइनोमियल पॉइजन कब बन सकता है? जब n इंफिनिटी हो जाए और p की वैल्यू टेंड्स टू 0. द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद लैम्डा mean is equal to np closely approximates the binomial distribution if n is large. पॉइजन बाइनोमियल कब बन सकता है? जब n बहुत लार्ज होगा, नंबर ऑफ सैंपल साइज, एंड p इज स्मॉल और p बहुत छोटा होगा, इट अप्रोचेस टू 0. The Poisson distribution is typically used as an approximation to the true underlying reality. It can be difficult to determine whether a random variable has a Poisson distribution. Next is normal distribution. Normal is a type of continuous probability distribution. It is a bell-shaped frequency distribution curve. Most of the data values in a normal distribution tend to cluster around the mean. The probability density function of the normal distribution is defined as f of x is equal to 1 upon sigma under root 2 pi e की पावर -1 by 2 x minus mu upon sigma का whole square, जहाँ पर e is the constant 2.71 and pi is 22 upon 7 or we can say 3.14. The normal distribution is completely determined by the parameters mu and sigma. जैसे अभी we have studied पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे कांस्टेंट क्या थे? म्यू एंड पी. इसमें हमारे पास क्या है? म्यू एंड सिग्मा. इट टर्न्स आउट दैट म्यू इज द मीन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और सिग्मा स्टैंड्स फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन. Now the characteristic of the normal distribution: it is symmetric and bell shaped. Next, continuous for all values of x between minus infinity and plus infinity, so that each conceivable interval of real numbers has a probability other than 0, and it ranges from minus infinity to plus infinity. There are two parameters mu and sigma. With this, the theoretical part of probability of unit number 4 has been complete. Kindly go through it and ask any doubt if you are having. Thank you so much.